हेलो गाइस, तो आज मैं अपना आज का बर्थडे ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैंने इसमें एक छोटा सा DIY भी किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सरप्राइज़ आपको कोई दूसरा ही दे। आप अपने लिए भी डेकोरेट कर सकते हो, अच्छे से रेडी हो सकते हो, कुछ नया डिश बना सकते हो। तो मैंने एक छोटा सा DIY किया, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने साड़ी और दुपट्टे का यूज किया और एक्चुअली, और उसमें मैंने पिलो भी यूज किया है, ब्लैंकेट, देन कुशन लगा दिए, और घर के जो डेकोरेटिव आइटम है उसके थ्रू मैंने एक छोटा सा मीन्स बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया ना, कि थोड़ा अच्छा लगता है, कि लगता है कि हाँ कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। तो मैंने एक छोटा सा DIY किया। तो आगे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कैसे होता है तो आप लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। तो फर्स्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे रोज़ दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे। मम्मी दे दो हैप्पी बर्थडे का, तो फ्लावर दे दो। हमको भी दोगे, गिफ्ट भी नहीं दी हमको। मम्मी चॉकलेट मोड़ी भी लाने को बेटा, यही दे दो। हैप्पी बर्थडे। हाँ, मैं भी तो देखो हाँ दो बेटो, ऐसे हो जाए ना, देखो इधर देखो, हाँ इधर देखो, तो दोनों बराबर है। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Molly. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे तुम्हारा। हेलो, सबको क्या दो? जाओ जाओ, एक एक करके जाओ। हैप्पी बर्थडे।
ले Yes! देख तू एक थोड़ा चाकू की ना नाइफ का है एज तो एक नंबर है जो बढ़ता जाएगा, लेकिन दिल को जवा रखे और अपना बर्थडे मनाते रहिए। ये मत सोचिए अरे मेरा अब एज क्या है, अब क्या होगा बर्थडे मना के, और नए कपड़े क्यों पहने, सेलिब्रेट क्यों करें, डिशेज क्यों बनाएं, क्या सजाना। अरे नहीं, नए नए डिशेज बनाइए, पूरा फुल रेडी होइए और मस्ती कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मौके ही होते हैं जो हमें सेलिब्रेट करने चाहिए। हम ऐसे ही जिसको गवा देते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यही तो एक मेमोरी है। खुश रहिए।